Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code. I'm Mukul Kumar, working as a software engineer at one of the FAANG companies. और आज हम एक जबरदस्त मॉक इंटरव्यू लेने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कैसा माहौल रहता है जब आप एक इंटरव्यू में जाते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना स्ट्रेस रहता है, कैसी सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर करते हैं एक Amazon के मॉक इंटरव्यू में बैठे हैं, हम Amazon का इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं अपने एक फ्रेंड का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो जिन्होंने अभी अभी Amazon के इंटरव्यूज क्लियर किए हैं, तो उन्हें भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। देखते हैं किस तरीके से उनकी टेक्निक रहती है, किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वाली सारी चीजें आज हम अभी देखने वाले हैं। एक फैंग कंपनी के इंटरव्यूज में ना यूजुअली आपको फीडबैक नहीं मिलता है, तो आज हमारा मेन मोटिव यही है कि यार जब हम इंटरव्यू को एंड करेंगे तो उस टाइम पर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे इंटरव्यू में क्या क्या चीजें सही गई और क्या क्या चीजें सही नहीं गई। पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद आपको एक कंक्लूजन मिलने वाला है जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। यार इंटरव्यू में क्या क्या गलतियां आपने की हैं, क्या क्या गलतियां आपने नहीं की हैं। तो मैं हूं मुकुल कुमार, मैं इंटरव्यूअर हूं इस मॉक इंटरव्यू में, और आज मेरे साथ मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है प्रवीण, जिन्होंने अभी अभी Amazon के इंटरव्यूज क्रैक किए हैं। कांग्रेचुलेशंस प्रवीण। और आज हमारे फ्रेंड प्रवीण, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड, एक कैंडिडेट बन के शुरू करने वाले हैं। तो जंप करते हैं जल्दी से इंटरव्यू के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स प्रवीण। Okay, hello Mukul, hello everyone. I am Praveen Mani. I have recently joined Amazon as a SD1 for Bangalore office. Previously, I have worked as a front-end web developer, a React developer at a healthcare and wellness startup, and also I was a teaching assistant for an Edtech startup as well. So today, let's start our mock interview. Yeah, that's great, Praveen. Let's jump into directly how the interview is going to be. Considering this is your first interview, so instead of taking up like a lot of questions in this interview, we're going to start up with one question only. Since we have a limited time, we don't want to invest a lot of time to record this. We will start with one question. You are supposed to solve that question within time limit, explain it, and optimize if possible. So this question is going to be based on problem solving using data structures and algorithms. I have shared a link with you in the chat. Can you open that link and share your screen as well? Okay, sure. So Amazon is quite famous for a lot of things. Like whenever we say Amazon, most of the people understand it's kind of a delivery company. So Yeah. a lot of places we are doing a lot of different kind of deliveries. Company has started drone delivery as well, but we will start with a basic problem that every scenario the delivery company faces, like every courier company, every post related company faces. In fact, it's not just a problem that every delivery person or every person faces. It's kind of a basic problem that every individual faces, whoever driving a vehicle. So let's say there are a lot of petrol pumps available in your city. Your aim is to start from the first place and go to the end of, let's say you're a delivery person, you start from A position and ultimately you have to reach to the position number B. To do that, ultimately you are going to need petrol or CNG or any kind of fuel which is going to help you to drive your vehicle and go to that, reach that place, right? So what's going to happen here is there are multiple petrol pumps in your place, in your path, and there is a limit of petrol that you can get from that place. So let's say every single petrol pump have their limit. First petrol pump have a limit of 5 units, so 5 units of 5 liters. So you can get at max 5 liters of petrol from that petrol pump, and then you can invest that to move forward. And 1 liter of petrol is going to be used for one step only. Every petrol pump is basically situated at, we can say, equal distance. First petrol is stated at place A, second at B, C, D, E, F. So every single petrol pump is situated at a equal distance. From petrol pump 1 to petrol pump 2, it's gonna take 1 unit of petrol. From 2 to 3, it's gonna take another 1 unit of petrol. And there's a maximum limit of petrol that you can get from that petrol pump. Your question here comes in, what is going to be the minimum number of petrol pumps that you have to visit, and ultimately you will be able to reach at the end of your goal. So let's say, let me take an example. Let me create a basic array which is petrol pump limit. Here is the array. So every single index represents one petrol pump. The value at that index represents the maximum number of petrol that you can get. So from first petrol pump, you can get 1 liter of petrol. Now 1 liter of petrol can be used to move only 1 block ahead. So this petrol will be consumed when you reach to this position. Now from this position you can take only 3 units of petrol, and so on. Now ultimately, after consuming all the petrols, you will be able to reach it to this position. Your aim
is to check if we are able to reach to this position or not, given the number of petrol pumps and the limits. If we are able to reach to that position, then find the minimum number of stops, like minimum number of petrol pumps that we have to visit, so that we can basically save our time and complete the delivery. Were you able to understand the problem, Praveen? Yeah, I think I got the question. We just have to reach the end of this array, and we have these ARR of I is representing the maximum number of petrol that we can use. So I have just a simple question. Can there be a zero that we cannot take any petrol? Okay, sounds like a very valid question. Yeah, there might be a possibility that you will go to a petrol pump where there is no petrol. So zero can be a possibility, but -1 won't be there because it doesn't make sense in real world scenario, right? So -1 won't. Okay, so I think, and we have to return the minimum number of steps that we have to stop on these, minimum number of petrol pumps that we have to visit. Exactly. So one thing that I can clearly come up with a brute force is that what if we try to solve it recursively and try to find that whether, and we give our each element two options that we can choose this, we can take this much petrol or we cannot take this petrol. For example, if we choose to take this 1 liter of petrol, we can move to this 3, but if we refuse to do so, we won't be able to get anywhere. For example, from 3 as well, we'll give this 3 two options, whether to take this 3 liters of petrol or not to take this 3 liters of petrol. If it takes 3 liters, he can jump to anywhere within these 3 jumps forward he can move. He can either go to 5 or 8 or even 9. So he has the option to go anywhere with three values. So if we, in this case, we can give every element two options. So worst case scenario, what can be? One thing for sure, if we cannot move to this ARR of I ending index, what do we have to return then? What if we can't reach at our ending index? We can return -1 in that situation. All right. So we will return -1 in that case. Okay. One thing, this is a basic recursive approach. We can give every element two options, whether to take this element, these liters of petrol or not. Okay. This approach looks good to me. I think it's gonna work as well. Can we write some code for this approach if possible? Okay, sure. So what I am trying to say is, what we have to return is an integer variable, and we are given an array list, a vector arr. We also need an I pointer. We will be needing a helper function as well here. Let's pass these extra variables here only. So let's give them I, and also the size of this array, let's name it n. First of all, what we want is, we will give each of them two options, whether these at each index we can include this or exclude this. At any moment, if our I is greater than or equals to n-1, we will straight away return 0 from here, that we have found this index. We will return true. Okay, what if we are standing here at 3, we want to pass these much elements. So int jump is equals to this minimum number of jump is 1, and this jump is less than equals to ARR of I. We will just increment by 1. So these are my jumps, and now for every jump we will call this function recursively ARR, and we will jump to this next jump. Like first it will jump with 1 and so on, and size will be passed. Okay, let's store this in some variable. Let's call it int 10 is equals to this. Let's also create a answer variable, int answer. Currently it is int max, so that we have to find the minimum number. So answer is equals to minimum of answer comma this temp variable. And finally, if our answer is equals to int max, we will just return -1. That means this is representing that we didn't reach end of our array. So we will return this, or else we will return this answer. I think this should work, but the time complexity of this is going to be n raised to the power n, because we are traversing on each element. From each element, we are also calling this for loop. This ARR of I might be the whole size of this. So yeah, n raised to the power n is the time complexity of this. Okay, let's check this. Just give me a couple of seconds. Okay, code looks mostly good to me, but time complexity is something which I am concerned about, because this is something which matters a lot in our scenarios. Let's say if we are designing an algorithm like this for a delivery people, that algorithm is going to run across multiple places. Like every single delivery person will be running that algorithm from our servers, and in that case I think it's gonna be a lot of havoc is going to create it. So is it possible to like optimize it from our side at least? Then we can think about rest of things, let's say low level design, the AWS stuff. We can think about those things later, but let's try to optimize the code that we have written.
Okay, so one thing that I can clearly say is that we are calling it repetitive. We are making repetitive calls. For example, starting from 3, we are going to 3 steps forward. Starting from 8 as well, we are also going to these elements. So these 9 is getting called itself 12. For every element, this is happening. So what we can do is try to memorize our code. If we use some extra space, if we make some trade-off, we can make some optimizations in our time. So should I do it? Okay, let's go for it. Yeah. So what I can see here is only our one variable, that is I, is changing. Yeah. So we will be needing only one DDP here. Should I edit in this code or do I have to write another code? Let's do one thing. Copy this code and paste it. Yeah, just copy this and let's make a global variable DP. Let's name it vector DP and let's initialize its size to be n. There's something that this array is passed from a function, or is this can we use this as a global array so that we can just take its size and edit it here? It is being passed from a function. So let's say we have a main function from which we are passing. Okay, let's create an main function as well. Okay. From here we are given this vector of int ARR. Yeah. So int n is equals to ARR.size. Now let's create a vector of DP here. Okay. Let's initialize all the values with -1 so that it will work as a flag here. Return 0 syntax closing brace. We have to call this function, call minimum number of jumps, minimum number of petrol pumps. Okay. We will pass ARR and I will be starting from 0 and int n, and we will also pass DP here, vector of int DP. What we have to do, return if I is greater than 0. While returning, we will just put this in our array, in our DP, that DP of I is equals to this answer, or else this DP of I equals to -1 as well. I think everything is fine. Edit here as well. Code seems fine. Okay, just give me some time. I guess we are missing some kind of thing. Can you explain what this DP array is exactly doing? What the job of this DP array, what it is supposed to hold and how it is working? Each index of its DP of I is representing that minimum number of petrol pumps from this current index we will need to reach the end of the R array. For example, to the DP of this index, the 7 representing the minimum number of jumps starting from this 7 to reach this 9. So currently this will just be 1 because it will be just take this 7 and reach the end. Similarly, this DP of 0 will be holding our answer. That minimum number of jumps starting from this 0 will be needed to get the end of the array. Okay. So Praveen, your approach looks good to me. But by looking at your code, I guess we are missing something. If I look at the code, the things that the DP is supposed to do, the things that you have explained just right now, I don't think it's doing. Can you please check that out? So we are returning DP of I as answer. Yeah. Okay, we have to check that if we have visited this index or not. So like DP of this I, if this is not equals to -1, starting from here, we will just return this DP of I. We will not make any recursive call. So it will just save us time. Can you explain the significance of this line? What would happen if this line was not present, and what is the impact it is making right now? So by removing this line, that as I did just currently, I forgot to put this line. This was working just similar to this previous recursive function. Okay. We did memoization just for this because we have to save time. Without this line, our function will be calling itself for n raised to the power n time. So yeah, the significance of this memoization is that it stops the redundant call. For example, if 9 is calling itself twice, it will save its answer in one go, and whenever it will reach at its 9 index, it will just return the whatever the value, the minimum number of petrol pumps was there. Nice. Good optimization over here. Okay. Yeah, I guess this snippet looks good to me as well. Its complexity is fine. Okay. I guess that is kind of a good thing. Yeah, do you have anything else that we can do? Let's say optimize this problem. At this moment it looks completely fine. Just a follow-up question, if we can do this, if we can optimize it, if we can reduce the space more, or if we can make it better in any way. If you have any thoughts, feel free to share it. It's just kind of a basic follow-up question. Okay, sure. One thing I can see is like we are just returning the minimum number of steps, right? Minimum number of petrol pumps that we have to pick. While we are traversing to the end, we can at some point we will just figure out that we have reached this index. So we don't have to make this recursive call after that. We can just return that we have reached this ending point. So what we can do is, if we were not just to call this recursive iterative way while we are traversing this, what if we calculate somehow that these many petrol pumps we have taken, and yes, whenever we find that petrol is sufficient to reach the n-1, we will just return that number of jumps
number of petrol pumps. So if we somehow can calculate that, what I think is, can I write some code and talk while coding? Okay, let's do that. Okay, what we want to do is, let's call this number of petrol only. If we have like number of steps that we are taking, currently these will be 0 and an answer variable to be 0 as well. Okay. And also a max reach, like maximum reach that we can jump to. For example, currently it will be 0. So starting from our 0th index, let's define ARR.size as well, I plus plus. First of all, we have to decrease our step, that currently our step is minus because we are standing on our first position. Whenever our number of steps reaches to 0, that we cannot move any forward, only then we will update our number of steps and also our current answer. Our answer will increase, that if only like for example at this, whenever we are starting from here, on standing here, our step will be decreased, will be 0. Only then we will update our answer that we have to take this petrol pump because we have reached our petrol limit to be 0. Okay. So then only we will update our answer to be decreased by 1, and also our steps will be the maximum reach that we can go to minus this current index. These are the steps that we can take now starting from here. After this, we will just return this answer. I think this codes look fine to me. We also have to check here that if our I is equals to n minus 1, we will just return answer from here, because that might be a possible that we are standing on the last index. Let me just copy this example from here. Yeah. And let me just try to explain you here what I'm trying to say. These steps are representing that the maximum number of steps starting from here we can take. Okay. This answer is storing the minimum number of petrols that we have to stop for, and this maximum reach is that the amount of petrol jumps that we can take. So for example, currently our step is 1. Once we entered our loop, we decreased our number of steps. So for starting here, we have our steps to be 0. We updated our maximum reach to be maximum reach, which is currently 0, or ARR of I plus I, that is these number of jumps starting from this index. Maximum reach currently is 1. If this maximum reach was not equals to our current position, we would have returned -1. This is representing that we couldn't have gone any further. So for example, currently it is 1, maximum reach is 1, which is greater than 0. So we will not fall in this. Now our steps are 0 because we decreased our steps to be starting from 1. We decreased our steps. Now it is 0. Now we checked if our I is equals to n minus 1, but it is not. So now we increased our answer to be 1, and also our step is equals to maximum reach, which was 1 minus 0. So our current steps that we can take is 1. Similar to this, when we reach to this index number 1, we will see that our step is again became 0 because steps was 1. So we again decreased it, decremented it. Now it is again 0. Now our max reach will be maximum reach of ARR of I, that is 3 plus 1, which is 4. That is we can jump to 4th index, that is still here. So now we saw that our maximum reach is still greater than I, and our step has become 0 again. So again at this moment we will increase our answer and we will update our number of steps that we can take. Currently this will be maximum reach, that is 4 minus 1, which is 3. We can move 3 steps forward. So that's how we will move till end of this array, and we can get our minimum number of answer, minimum number of petrol, because we are only incrementing our answer when we have our steps to be 0. Looks like a very optimized and sharp approach. Nice work over here. Okay, I think we're done with this problem. If this was a real interview, we would have solved another problem in this time, but we're stopping since we just have to demonstrate how we are doing stuff. I have not noted down a lot of things. अभी इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं हमारे चैनल स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है न्यूटन स्कूल, जो कि हमें वीडियोस बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपके टेक करियर को आगे फॉरवर्ड ले जाने के लिए। अगर आपने अभी तक अपना टेक में करियर स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप टेक में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है न्यूटन स्कूल आपके लिए बहुत जबरदस्त जगह होने वाली है। मेरा पर्सनल फेवरेट है उनका पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको 6 महीने तक सारी की सारी टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, आपको परफेक्ट बढ़िया तरीके से एक अच्छा इंजीनियर बनाने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद आपको कंपनीज में प्लेस कराने की कोशिश की जाती है। आपको बहुत सारी कंपनीज में बिठाया जाता है, वहां पर आप इंटरव्यूज देते हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं इनके अपने, कुछ आप सिलेक्ट होते हैं, और आप इस टाइम पीरियड में कुछ भी पे नहीं कर रहे होते। आपको कुछ पे नहीं करना होता जब तक आप एक डिजायर्ड एक अच्छी जॉब नहीं ले लेते। तो अगर आपने अभी तक न्यूटन स्कूल को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी जाकर चेकआउट। कमिंग बैक टू द मॉक इंटरव्यू, तो अभी हमने मेन पार्ट पर आने वाले हैं, जो कि हर फैंग इंटरव्यू में मिसिंग होता है, जो कि होता है फीडबैक वाला पार्ट। तो यार अगर आपने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो गलत कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 2 बंदे अपना टाइम इन्वेस्ट करके बैठे हैं, यहाँ पे पंखा, एसी, कूलर कुछ भी नहीं है, गर्मी में
पसीने आ रहे हैं, यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है और एक दो अपने इंजीनियर्स अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रात को 12 बजने वाले हैं, संडे का टाइम है, तो कुछ इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन तो बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीज की यार, जो इस इंटरव्यू में से मैंने निकाली है, जो कि एक इंटरव्यूअर ढूंढ रहा होता है, और फिर डिस्कस करते हैं कि यार प्रवीण इस इंटरव्यू में पास हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपने नोट से ही रीड करने वाला हूँ जो अभी तक मैंने बनाए हैं। बात करते हैं यार, काफी सही चीज। अगर प्रवीण आप अगर सबसे ऊपर तक जा सके, तो जब मैंने क्वेश्चन को पेस्ट किया ना, जब मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट किया अपनी साइड से, तो प्रवीण ने डायरेक्टली एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछा कि यार जो पेट्रोल पंप की लिमिट है वो 0 और -1 हो सकती है। यानी कि उनके ब्रेन में एक एज केस आया, एक कंडीशन सी आई, तो उन्होंने उसी टाइम पर पूछ ली। और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है सारी चीजें क्लैरिफाई करने की क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि जितनी लेट वो चीज समझ में आएगी ना, उतना ही ज्यादा लॉस है। समझो, आपको वो चीज 10 मिनट बाद आपको समझ में आई, आपने वो डाउट 10 मिनट बाद पूछा ना, पिछले 10 मिनट आपके वेस्ट थे। असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। वो एक सिंगल मिस इन्फॉर्मेशन, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन जो गायब थी, वो पूरा क्वेश्चन ही बदल सकता। ठीक है, बात करते हैं दूसरी जो बढ़िया चीज प्रवीण ने की। इन्होंने सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच का नाम लिया। यार क्वेश्चन इन्होंने समझ लिया कैसे क्या हो रहा है, फिर उन्होंने सीधा बोला कि यार ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ऐसे हो सकती है, रिकर्शन से ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कुछ ऐसा आइडिया आया। यूजुअली एक इंटरव्यूअर ब्रूट फोर्स को कोड करने को नहीं बोलता, लेकिन सिंस ये रिकर्सिव अप्रोच थी, उसमें हमें कोड को देख के और ज्यादा अच्छा आइडिया मिलता है, इसलिए मैंने कोड करने के लिए भी बोल दिया कि ठीक है, छोटा सा फंक्शन बनेगा, रिकर्सिव अप्रोच को भी अपन लोग कोड कर लेते हैं। इसके बाद है ना, एक छोटी सी मिस्टेक हुई प्रवीण से, जो कि प्रवीण जब भी बात कर रहे थे ना, वो हमेशा ही की टर्म में बात कर रहे थे कि यार जो ड्राइवर है, ही कैन जंप टू दिस पोजीशन, ही कैन डू दिस, ही कैन टेक 3 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल, ही कैन डू दैट। तो इंस्टेड ऑफ 5, जब मैंने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, तब मैंने बताया था कि यार आप ड्राइवर हो, ऐसे ऐसे। तो मतलब इतना कुछ इंटरव्यू पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बार रेजर राउंड जो होते हैं आपके, या गूगलीनेस जो राउंड होते हैं ना, उनमें ये चीज बहुत मैटर करती है कि भाई बंदा ही यूज कर रहा है या शी यूज कर रहा है। तो इस टाइम पर क्या होता है, या तो तुम दोनों तीनों जो भी जेंडर्स होते हैं उन्हें यूज कर लो, या फिर अपने ऊपर चीज को ले लो कि यार एट दिस पॉइंट आई कैन टेक 3 यूनिट्स ऑफ दिस, आई कैन टेक 3 यूनिट्स ऑफ दैट पेट्रोल एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये तो हो गई तीसरी चीज। ठीक है, एक चीज जो भाई सबसे जरूरी होती है ना, वो होती है बोलना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप कितना टाइम दे रहे हो। अगर बंदा इंटरव्यू में है, मैंने उसे क्वेश्चन दे दिया, वो 15 मिनट चुप बैठे है, अगर वो 15 मिनट बाद मुझे आंसर ला के दे देता है, बेस्ट, मुझे कोई दिक्कत। 15 मिनट बाद अगर वो आंसर नहीं ला के देता ना, तब एक तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेकार है, दूसरी चीज उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेकार है। क्योंकि अगर वो मेरे साथ कुछ ना कुछ बोल रहा होता, कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहा होता, तो मैं उसे हिंट देता, मैं देखता कि यार कहाँ पे अटक रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। अगर वो अटक के बैठ जाएगा, बंदा कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो सब कुछ बिगड़ चुका है सब कुछ। प्रवीण ने स्टार्टिंग से ही बोलना शुरू किया। मोस्टली इंटरव्यूज में यही काम होता है, इंटरव्यूअर आपके नोट्स ले रहा होगा और सामने वाला जो कैंडिडेट है वो बोल रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा अपने थॉट्स को, जो कुछ रैंडम चल रहा है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, इसमें अगर वो बोलता कि यार वो बाइनरी सर्च लगा रहा है, तब भी मैं सोचता कि हाँ चल बाइनरी सर्च से कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ वो सोच रहा है, कुछ ना कुछ अप्रोच आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि भैया वो चुप बैठेगा तो मैं भी क्या करूंगा, मैं अपना एक साइड में अपना ईमेल करना शुरू कर दूंगा, अपना काम करना शुरू कर दूंगा। मैं भी अपने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बैठा हूँ ना, एक इंटरव्यूअर भी अपना नॉर्मल काम से अलग बैठा है। तो कम्युनिकेशन इज द की इफ यू आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, वरना सारे इंटरव्यूज आपके खत्म है एकदम। तो प्रवीण ने बहुत बढ़िया चीज करी, बोल बोल के सारी चीजें करी, डिस्कशंस हुए, इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी खुद ही बता दी कि यार बेकार है। इससे पहले मैं पूछता कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितनी हो सकती है, बेकार है, क्या है, तो इन्होंने खुद ही बता दिया बेकार है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते। इसके बाद यार एक और चीज मुझे लगी, सबका है ना एक अलग अलग पैटर्न होता है कोडिंग का। प्रवीण का जैसे मैंने एक फंक्शन लिखने का देखा, मिनिमम अंडर नंबर अंडर पेट्रोल अंडर पंप्स, तो ये ठीक है, लेकिन यूजुअली हम कैमल केस फॉलो करते हैं। जैसे लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है, कुछ लैंग्वेजेस में हम किस तरीके से लिखते हैं, कुछ में किसी तरीके से, लेकिन अगर हम एक जेनरिक वे देखें तो मैं कैमल केस देखना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर हम कैमल केस यूज कर सकते थे, मिनिमम नंबर हट सकता था, इसमें से मिनिमम पेट्रोल पंप्स भी चल जाता, तो नेमिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। और नेमिंग से ही कोड क्वालिटी की बात करते हैं, जो कि गूगल में बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। जैसे कि प्रवीण ने अज्यूम किया कि यार एक वेक्टर हम ले रहे हैं जिसका नाम है ARR, ARR की जगह पर हम लिख सकते थे पेट्रोल पंप लिमिट,
लिमिट या फिर पेट्रोल लिमिट या फिर ऐसा कुछ एरे ले सकते हैं ना। आई तो चलो चल जाता है, एन की जगह पर हम सीधा साइज लिख सकते थे n-1 या फिर साइज -1 हो जाता। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीजें इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। नीचे भी अगर मैं देखूं तो नीचे वाले कोड के अंदर हमने एक चीज देखी, आंसर वेरिएबल यूज हुआ था, टेम्प वेरिएबल यूज हुआ था। ये चीजें इतनी मैटर नहीं कर रही है इस टाइम पे, लेकिन जब बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा होता ना, तब अच्छा कोड लिख रखा होता है प्रीवियस, तो हमारे पास पॉइंटर्स जाते हैं। मुझे रिक्रूटर को बताना है बंदा कोडिंग में अच्छा है, बंदा कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा है, बंदे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, उसके लिए मेरे पास पॉइंट्स होने चाहिए और वो मैं पॉइंट्स यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो ये वाली चीज हो गई। बात करते हैं इंट मेन फंक्शन की। तो प्रवीण ने बहुत जबरदस्त चीज करी, इन्होंने इंट मेन फंक्शन जो ड्राइवर फंक्शन होता है यूजुअली, जिसे हम ड्राइवर फंक्शन बोलते हैं, वो लिखने से पहले पूछा यार हम ड्राइवर फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को क्या होने वाला है। जब भी आप कुछ नया फंक्शन बनाओ पहले एक बार कंसेंट ले लो कि यार ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लास बनाओ तो पूछ लो, इनकैप्सुलेशन करो, इनहेरिटेंस करो, कोड के अंदर कुछ भी ऐसा चेंज करो जो एक फंक्शन से बाहर जा रहा है, तो पहले एक बार कंसेंट ले लो कि क्या चीज है। यहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया, बढ़िया तरीके से, ये वाली चीज मुझे सही लगी। और जब भी वो कोड को लिख रहे थे ना, कोड को लिखने से पहले कंसेंट ले लो। जैसे लास्ट जो अप्रोच प्रवीण ने बताई, उन्होंने उससे लिखने से पहले ही पूछ लिया कि यार इस अप्रोच में मैं कोड करने से मतलब पहले थोड़ा सा कोड करते करते बात करूं क्या, तब मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल करते हैं, ये वाली चीज करते हैं। तो उन्होंने कोड करना शुरू किया, ब्रेन में थोड़ा और अच्छे थॉट्स बने कि यार ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अल्टीमेटली क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई है ही जबरदस्त है, भाई ने 3 अप्रोच निकाल दिए हैं। यूजुअली मेमोराइजेशन पे भी हम रुक जाते, लेकिन हमारे पास टाइम था थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए, हमने एक और अप्रोच देख ली, मजा आया, बढ़िया जबरदस्त, एकदम मजा आ गया अप्रोच देख के। दूसरी चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई डन। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टार्टिंग से एंड तक कम्युनिकेशन की होती है, बढ़िया तरीके से काम किया। केसेस उन्होंने स्टार्टिंग में पूछ लिए कि यार 0 होगा, -1 होगा, वो चीज उन्होंने कोड में इंप्लीमेंट भी की। लास्ट में अगर 0 है तो हम वहीं पर ही रिटर्न कर देंगे, एंड में पहुंच गए तो रिटर्न कर देंगे, जो कुछ भी था, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, बाकी क्वेश्चन बंदे ने सॉल्व किया, अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी बता दी, परफॉर्मेंस बढ़िया एकदम। तो प्रवीण भाई तो हमारे इस इंटरव्यू में पास हो गए हैं, ऑब्वियसली होना भी था, तभी अमेज़न में बैठे हैं तो यार यही था मॉक इंटरव्यू की सारी चीजें, कैसे मॉक इंटरव्यू होता है, कैसे चीजें होती हैं, क्या फीडबैक वाला पार्ट होता है, क्या क्या चीजें आपकी नोट डाउन की जाती हैं, वो सारी चीजें मैंने बताई हैं, जनरली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यार यही था मॉक इंटरव्यू का। अगर भाई अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई हमारे इंटरव्यू बेकार जाने वाले हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना सही से, ठीक है। और थैंक यू सो मच प्रवीण, थैंक यू सो मच प्रवीण फॉर योर ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक वर्किंग प्रोफेशनल अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे नॉलेज शेयर करने में बहुत मैटर करता है। मैं तो खैर वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन एक अलग से पर्सन आके सोचो मॉक इंटरव्यू दे रहा है आपके लिए, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज अ लॉट। आप प्रवीण का लिंक्डइन वगैरह हम डाल देंगे, वहां पर जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं काफी सारी चीजें। दैट्स एवरीथिंग। थैंक यू सो मच प्रवीण, आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।